ट्रेंड्स चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा इनलाइटन करें। We have assembled to listen to the discussion on the trends of emerging trends in the literature of Northeastern मनीषी साहित्यकार भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से अनेक हमारे अध्येता बंधु पधारे हैं। आप सभी लोगों का इसमें स्वागत है। मुझे प्रसन्नता है कि मैं यहाँ उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में, और इसके लिए मैं साहित्य अकादमी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। यद्यपि जो ये सेशन है उसका नाम नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्दर्न लिटरेचर से संबंधित है, और मुझे संस्कृत को प्रतिनिधित्व उसका करने के लिए बुलाया गया है, तो ये ठीक है कि संस्कृत जो है वो उत्तर की भाषा है, लेकिन वो केवल उत्तर की भाषा नहीं है, वो संपूर्ण भारत की भाषा है। संभवतः हमारी भारतीय भाषाओं में केवल और केवल संस्कृत ही है जो इतने तृणमूल स्तर पर अब भी भारत के संपूर्ण कोने कोने में उसमें लिखने पढ़ने वाले विद्यमान हैं। यद्यपि उसकी गति मंद हो चुकी है, इससे मंद हो चुकी है या मंद लगती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर के पश्चिम, पूर्वोत्तर, उत्तर, हर जगह जो है वो संस्कृत की रचना धर्मिता आपको दिखाई पड़ती है, और इसका संस्कृत की अखिल भारतीयता और सर्वकालिकता का सीधा सीधा संबंध उसके इमर्जिंग ट्रेंड्स से है। उसकी प्रवृत्तियां कितनी अधिक हैं, कितनी अधिक प्रवृत्तियां निरंतर उसमें आ रही हैं, इसका संबंध उसकी अखिल भारतीयता से है। कारण यह है कि संस्कृत भाषा जो है वो शताब्दियों से ट्रांसरीजनलाइजेशन का एक सर्व क्षेत्रीयतावाद जो है, क्षेत्रीय चीजों को अखिल भारतीय स्तर पर और अखिल भारतीय चीजों को, साहित्यिक चीजों को क्षेत्रीय स्तर पर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा साधन रही है, और अब भी बहुत सारे मायनों में संस्कृत भाषा वो कार्य कर रही है। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं, और उसमें केवल संस्कृत की मंदता कारण नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण भी हैं, जिससे हमको ये लगता है कि संस्कृत और उसमें इमर्जिंग ट्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। तो उसमें जो अज्ञातता है सामान्य लोगों की, वो बहुत बड़ा कारण है। और मैं किसी पर आक्षेप नहीं करता, संस्कृतेतर लोगों पे आक्षेप नहीं करता, स्वयं संस्कृत के लोगों में संस्कृत की रचना धर्मिता के बारे में बहुत ज्यादा भ्रांति है। वो विश्वास नहीं करते कि संस्कृत में इस तरह की रचनाएं हो रही हैं। उसके बहुत सारे स्वाभाविक कारण भी हैं, कृत्रिम कारण भी हैं। स्वाभाविक कारण यह है कि संस्कृत में शास्त्रीयता का जो पक्ष है वो बड़ा गाढ़ा है, बहुत व्यावहारिक है, साहित्य की अपेक्षा। यद्यपि साहित्य का पक्ष बहुत, आधुनिक साहित्य का पक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो समृद्ध अतीत की जो प्रगाढ़ निरंतरता है, उसके दबाव के कारण स्वयं संस्कृत के विद्वानों में ये प्रवाद स्पष्ट नहीं हो पाता, ये मत स्थिर नहीं हो पाता कि संस्कृत का आधुनिक साहित्य इतना वाइब्रेंट है, इतना अधिक उसमें आधुनिक विमर्श उत्पन्न हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो आधुनिकता की बहुत बड़ी विडंबना है, वो विडंबना ये है कि उसने मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को एक दूसरे के बरअक्स देखा। वो जो ट्रेडिशन की कब्र पर, उसके शव पर आसीन होती है मॉडर्निटी, संस्कृत ऐसा विश्वास नहीं करती। तो इसलिए संस्कृत में नए ट्रेंड्स तो आ रहे हैं, लेकिन अन्यान्य भाषाओं की तरह पुरातन जो खिदमत दुश्मनी जिसको हम कह सकते हैं, पुरातन के साथ शत्रुता आवश्यक रूप से करने के बाद ही हम आधुनिक हो सकते हैं, इस तरह की बात नहीं है। क्योंकि एक सनातनता का कॉन्सेप्ट है, जो प्राचीनता है वो पुनरावतीर्ण होती है आधुनिकता के रूप में। तो अब एक उदाहरण के लिए मैं कहूं,
अगर किसी आधुनिक भारतीय भाषा में अगर महाकाव्य लिखा जाए तो आलोचकों को अद्भुत लगेगा, विचित्र लगेगा, लेकिन संस्कृत में ये विचित्र नहीं लग सकता। तो संस्कृत में मुक्त छंद भी उतना ही स्वाभाविक है जितना कि एक महाकाव्य का लिखा जाना, खंड काव्य का लिखा जाना। तो प्राचीनता का सारा वैभव लेकर के आधुनिकता में प्रवेश करना और आधुनिक भावबोध को प्राचीनता के कालिब में, प्राचीनता के फॉर्म में लेकर के आना, ये संस्कृत आधुनिक संस्कृत साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है, जो संभवतः उसको अन्य भारतीय साहित्य से, आधुनिक भारतीय साहित्य से एक विशिष्ट स्थान देता है। तो एक तो संस्कृत के वाङ्मय की जो आधुनिक प्रवृत्तियां हैं उसमें अखिल भारतीय ट्रेंड्स मिलते हैं। कारण यह है कि संस्कृत की प्रकृति ही हमेशा से ऐसी रही है, क्योंकि वो किसी एक क्षेत्र की विशेष की भाषा न होने के कारण पूरे भारत के क्षेत्रों से उसके छंद जो है वो पूरे भारत के छंदों से बने हैं। आप दक्षिण के कुछ छंद जैसे आर्या है, गाथा है, स्कंधक है, वो हम पूरे भारत में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका ओरिजिन दक्षिण है। कुछ चीजें पूरब से पैदा हुई हैं जो अखिल भारतीय स्तर पर आई हुई हैं। तो संस्कृत में प्रयोग धर्मिता का एक आयामी प्रकार नहीं है, बहुआयामी प्रकार है। प्रयोग धर्मिता जो, उदाहरण के लिए संस्कृत में दक्षिण में प्रचलित जो यक्षगान है वो भी आप देख सकते हैं। पंजाब का कोई कवि है तो वो संस्कृत में आप टप्पे और माहिए भी उसमें देख सकते हैं। आप गुजरात का रास, भोजपुरी का की कजरी वगैरह जो है वो सारी संस्कृत में आप देख सकते हैं। उसकी समस्याएं भी, हम समस्याओं पर आएंगे, जो आधुनिक विमर्श है वो किस तरह से आते हैं। तो संस्कृत का साहित्य अखिल भारतीय होते हुए भी भाषा और मुहावरों और भाव के स्तर पर अपनी क्षेत्रीयता को बरकरार रखता है। तो इस तरह से वो क्षेत्रीयता और अखिल भारतीयता दोनों को एक साथ साध पाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके साथ जो बाहरी प्रभाव हैं, जो बाहरी भाषाओं से या फिर हिंदी इत्यादि भाषाओं से, कर्नाटक का संस्कृत कवि जो है वो कन्नड़ से प्रभावित है, उत्तर का संस्कृत कवि जो है वो हिंदी से प्रभावित हो सकता है, पंजाबी से प्रभावित हो सकता है, और वहां की सारी चीजें उसके साहित्य में आती हैं। तो संस्कृत भाषा में अब ऐसी नई प्रवृत्तियां, विधाओं और विमर्शों दोनों के स्तरों पर आने लगी हैं जो संस्कृत के सहस्रों वर्षों के, हजारों वर्षों के इतिहास में कभी भी प्रयुक्त नहीं रही हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। और एक विशेष बात यह है कि संपूर्ण कालखंड को, अतीत को भी अतीत न मानने के कारण वो सभी ट्रेंड्स जो हैं उसमें एक साथ विद्यमान रहते हैं। अब उदाहरण के लिए प्राकृत काल की जो मुक्तक पद्धति है, प्राकृत के समय की अपनी विशेषता है मुक्तक पद्धति, वो भी आपको संस्कृत में मिलेगी। गीतों का काल जो है अपभ्रंशों का काल है, तो संस्कृत में अपभ्रंश काल की वो विशेषता भी मिलेगी। भक्ति काल के विविध छंद में मिल सकते हैं आपको। और ज्यादा क्या कहें, उर्दू फारसी से जो ली गई हमारी शैली है गजल पद्धति, वो संस्कृत में बहुत ही उर्वर अवस्था में है। तो गद्यात्मकता जो संस्कृत में बहुत कम रही है हजारों वर्षों के इतिहास में, वो बहुत तेजी से आ रही है। उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी इत्यादि के सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो ये विधाओं की चर्चा हुई। विमर्शों के स्तर पर भी संस्कृत में नए नए विमर्श आ रहे हैं, और संभवतः इस संदर्भ में नवीनता संस्कृत साहित्य में बहुत अधिक है। नारी विमर्श हो या दलित विमर्श हो, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर का जो विमर्श है, या संस्कृत में ये चीज बहुत कम रही कि स्त्री किस तरह से पुरुष की नजर में है, इस पर तो साहित्य भरा हुआ है, लेकिन एक स्त्री पुरुष को देख करके क्या अनुभव करती है, इस प्रकार का साहित्य जो है इन वर्षों में आया है। और एक शतावधानी गणेश है, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी काव्य ही इस विषय पर लिखा है कि स्त्री किस तरह से पुरुष को देख करके वो अपने अनुभवों को लिखती है। तो संस्कृत में भाषा और भाव और के स्तर पर प्राचीनता और नवीनता का एक अद्भुत सा सामंजस्य, अद्भुत सा सहकार दिखाई पड़ता है। मैं कुछ उदाहरण भी देना चाहता हूँ। एक बड़े कवि हैं, बहुत सारे कवि हैं, मैं अतिरिक्त अलग से नाम नहीं लूंगा। एक कवि जो है वो कहता है कि एक
नवविवाहिता स्त्री है, औरत है, जो कि स्नान जो बाथरूम में जाती है और वो स्नानगृहं गत्वा गृहक्लेश शांता वधूः निःशब्दं रोदिति तदा स्नानगृहं तस्याः पितृगृहं भवति। वो स्नान घर में जा करके घर के आतंक से दुखित होकर के निःशब्द रोती है, बिना आवाज किए। उस समय उसका स्नान गृह उसका पितृगृह बन जाता है, उसके पिता का घर उसका मायका बन जाता है। तो इस तरह के अद्भुत सुंदर कविताएं आपको और नए नए कवि आपको, आप कन्नड़ के एक कवि, कर्नाटक के कवि हैं महेश, उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है। एक काम करने वाली कोई औरत है, उसका बच्चा छोटा रोता रोता सो गया है और वो काम से लौट करके आती है। उसका मन चाहता है कि उसको दुलार कर ले अपने हाथों से, लेकिन अपने हाथों को देखती है, वो काम करते हुए उसके हाथ इतने खुरदरे हो गए हैं कि बच्चा जग जाएगा, इसके डर से वो बच्चे को प्रेम भी नहीं कर पाती है। और वो कविता जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल में लिखी हुई है, स्कंधक जो छंद कहा जाता है। रोदम रोदम शैतम स्वशिशुम गृहकर्म परुष हस्ता माता वात्सल्य मृदुल दृग्भ्यामेव स्पृशति प्रबोध भीत्या भूयः। तो अपने वात्सल्य से मृदुल आंखों से ही उसको देख करके प्यार कर पाती है। आपका समय हो रहा है जी। तो पहली कविता हर्षदेव माधव की थी, दूसरी कविता महेश भट्ट जो बहुत ही आधुनिक युवा कवि हैं उनकी थी। तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं और विधाओं के स्तर पर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, गजल जो है वो संस्कृत की बड़ी ही उर्वर है, बड़ी अद्भुत रचनाएं उसमें आ रही हैं। संस्कृत में पारंपरिक शैली में लिखते हुए भी नवीन उद्भावनाएं जो है वो आ रही हैं, नवीन शैलियों में भी लेखन हो रहा है। तो संपूर्ण चीजों को एक साथ लेकर के चलने के कारण वो जो महनीयता संस्कृत में थी उसमें और अभिवृद्धि आधुनिक काल में हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सभी लोगों का सुना। Now I would like to request Jitendra Srivastava ji to enlighten us. धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष जी और मंच पर उपस्थित मेरे साथ के सहभागी वक्तागण, सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, 10 मिनट का समय है और ट्रेंड्स पर बात करनी है, तो सीधे ट्रेंड पे मैं बात करूंगा कि हिंदी में जो इस समय ट्रेंड्स हैं वो किस तरह के हैं, कैसे हैं। हमारे एक बड़े आचार्य हुए रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे चित्तवृत्तियां बदलती हैं वैसे वैसे साहित्य का इतिहास बदलता है। मनुष्य की जो चित्तवृत्तियां हैं बदलती हैं तो इतिहास बदल जाता है। देखिए, जब समय बदलेगा तो निश्चित तौर पर साहित्य भी बदलेगा, उसका ट्रेंड भी बदलेगा। अगर वह नहीं बदला तो फिर वो साहित्य कहलाने का हकदार इसलिए नहीं है कि साहित्य को सिर्फ समय के साथ नहीं चलना होता है, कई बार समय से आगे भी चलना होता है। इसलिए समय बदलने के साथ ट्रेंड्स को तो अनिवार्य रूप से बदल जाना चाहिए। जिक्र कर रहे थे अध्यक्ष जी की हिंदी में बहुत दिनों से स्त्री विमर्श है। दरअसल अगर आप स्त्री विमर्श को भी देखेंगे ट्रेंड के तौर पर, तो 80s का स्त्री विमर्श आज 2021 में नहीं है, उसमें बहुत परिवर्तन है। 80 के आसपास या उसके भी पहले जब महादेवी वर्मा 1942 में श्रृंखला की कड़ियां किताब छपवा रही थी, तब का स्त्री विमर्श और 1980 का स्त्री विमर्श, 1990 का स्त्री विमर्श और 2022 का स्त्री विमर्श बहुत फर्क है। तब स्त्री सिर्फ अपने लिए स्पेस की गुंजाइश देख रही थी कि कहां हो सकता है, अब उसे वो स्पेस दिखाई देता है, लेकिन उस स्पेस को लेकर जो बहुत सारी जद्दोजहद है, अब उसकी कविताएं और कहानियां हिंदी में आ रही। अब 42 के आसपास ये सवाल नहीं था, 80s में ये सवाल नहीं था, 90s में आकर सवाल हुआ कि मेरा घर कहां है, पिता का घर है, पति का घर है, मेरा घर कहां है। इससे भी अब आगे का सवाल स्त्रियां लेकर के आ गई हैं। तो जो स्त्री विमर्श के भीतर निरंतर गतिशीलता है, बदलाव है, दरअसल उसको रेखांकित करने की जरूरत है। अब स्त्री विमर्श हिंदी में देह की स्वायत्तता से बहुत आगे चला गया है। वो प्रश्न महत्वपूर्ण था, है, लेकिन अब उससे बहुत आगे की चीज है। अब बराबर के हकदार होने का मामला है, सब कुछ में बराबरी का मामला है, वो भाव जगत हो या भौतिक जगत, वो दोनों का मामला है। तो स्त्री विमर्श में जो ट्रेंड है वो बहुत तेजी से बदला है, इसको इस रूप में देखने की जरूरत है।
क्षमा करेंगे, मेरा चश्मा दे दीजिए। तो जो दूसरी चीज है कि एक और चीज है कि बाजार इन दिनों एक केंद्रीय विषय है हिंदी साहित्य का, कविता में भी और कहानी में भी और विचार में भी। लेकिन ये देखने की जरूरत है कि अनिवार्य रूप से सब बाजार का विरोध नहीं कर रहे हैं, बाजार के समर्थन में लिखने वाले लोग भी हैं, और ये वहीं से चलता है कि दरअसल पूंजीवाद की आपकी समझ क्या है, आप पूंजीवाद को किस तरह देखते हैं। स्त्री विमर्श में जैसे कि पेट्रियार्की को आप कैसे समझते हैं, पेट्रियार्की की जड़ता और उसकी गतिशीलता को आप कैसे समझते हैं, इससे तय होगा कि आप स्त्री विमर्श का जो लेखन है आप उसका भाष्य करने में सक्षम हैं या नहीं। सेम चीज इसके साथ है कि बाजार में आप कैपिटलिज्म को कैसे समझते हैं, इससे तय होगा कि आपके लिए तो बाजार भी एक ट्रेंड है, उसको लेकर आने का मामला है हिंदी में, वो चीज भी निकल करके आई है, देखने की चीज है। मातृत्व को लेकर के स्त्रियों ने बहुत अलग तरह की अब कविताएं लिखी हैं, वो 70s 80s की कविताएं नहीं है, बिल्कुल अलग तरह से कविताएं हिंदी में आई हैं। दलित विमर्श का जिक्र आया, हम सब जानते हैं कि हिंदी में वो एक प्रमुख घटक के तौर पर इस समय उपस्थित है, लेकिन वहां भी बहुत बदलाव हुआ। 1990 के आसपास हिंदी में जब बहुत तेजी से दलित विमर्श आया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अम्बेडकरवादी राजनीति की बात आई, तब से लेकर अब तक लगभग 40 वर्षों में 35 वर्षों में दलित विमर्श के भीतर भी बहुत सारी चीजें बदल गई। अब राजनीतिक रूप भी बदल गया है और आरंभिक जो आक्रामकता थी वो गहरी वैचारिकता ने अब उसमें जगह दी। आरंभिक आक्रामकता थी, जो प्रतिक्रिया थी, अब वो वैचारिकता में बदल गई है और कहीं ना कहीं वहां पर भी अब सहभाव की स्थिति है कि आओ मिलकर बैठें बतियाएं, तब दिक्कतें दूर होंगी। यानी कि कभी भी देखिए जब कोई विमर्श आएगा तो आरंभिक रूप में वो प्रतिक्रिया में होता है, वो चाहे स्त्री विमर्श हो, दलित विमर्श हो, आदिवासी विमर्श हो, विमर्श आएगा तो रिएक्शन में आता है, लेकिन रिएक्शन बहुत दिन तक नहीं चल सकता। अगर आपको सचमुच एक सुंदर दुनिया बनानी है जिसके लिए विमर्श आते हैं तो आपको फिर सहकार की ओर जाना होता है। तो अब दलित विमर्श में भी वो चीज आई है। आदिवासी विमर्श चूंकि दलित विमर्श वगैरह के बाद हिंदी में आया है तो वहां प्रतिक्रिया से अधिक प्रतिक्रिया है वहां पर भी, लेकिन सहकार का भाव वहां पर भी है जिसका जिक्र आप कर रहे थे हिंदी में। और ये अच्छी बात है कि सिर्फ हम हिंदी को उत्तर की भाषा के तौर पर कैसे देखें जब हमें अरुणाचल में कवि मिल रहे हैं और अच्छी कविता लिखने वाले कवि मिल रहे हैं, तो एक तरह से ये ट्रेंड हिंदी का जहां जहां भी दक्षिण में लिखने वाले लोग हैं, दक्षिण में लोग हिंदी में लिख रहे हैं इन्हीं ट्रेंड्स को लेकर के। पिछड़ा विमर्श एक आया है पिछले दिनों हिंदी में, और इसको लेकर के फॉरवर्ड प्रेस नाम का एक पत्रिका रही है, इन लोगों ने विमर्श खड़ा किया है। जो हिंदी के पीछे के लेखक रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु जैसे, उनके साहित्य को नए ढंग से समझने की कोशिश की है लोगों ने पिछड़ा विमर्श के आधार पर सामाजिक न्याय को केंद्र में रख करके, हालांकि अभी ये बनने की प्रक्रिया में है। और बहुत सारी चीजें हैं दलित विमर्श से अलग इसको देखना होगा, क्योंकि छूत अछूत का मामला वहां था, पिछड़े वर्ग में वो मामला नहीं है। यानी कि जाति को लेकर छूत अछूत को लेकर जो मामला दलित के साथ है वो पिछड़े वर्ग के साथ नहीं है। इसलिए यहाँ पर पिछड़ा वर्ग का जो मामला है वहां अधिकारों या समान अधिकारों की लड़ाई का मामला अधिक है, अपने प्रतिनिधित्व का मामला अधिक है। उस ट्रेंड्स को देखना चाहिए। हालांकि मैं फणीश्वर नाथ रेणु के लिटरेचर को पिछड़े लिटरेचर के तौर पर नहीं देखता हूँ, वो मेन स्ट्रीम का लिटरेचर तब भी था आज भी है और बना हुआ है। थर्ड जेंडर को लेकर बात हुई, एलजीबीटी को लेकर के यहाँ सत्र चल रहे हैं, हिंदी में भी आया। थर्ड जेंडर के लोग भी आकर लिख रहे हैं और हिंदी में थर्ड जेंडर को लेकर के महत्वपूर्ण कृतियां लिखी गई हैं। चित्रा मुद्गल के उपन्यास को तो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, नाला सुपारा को लेकर, समलैंगिकता को लेकर के पहले एक कभी उर्दू की हमारी इसमें चुगताई की कहानी को लेकर है, अब वो उस तरह का टैबू वाला मामला नहीं है। जिनको 80s में बोल्ड माना जाता था आज वो सहज है। कोई स्त्री चित्रा मुद्गल, क्योंकि जो तमाम पुरुषों की भी समझ है स्त्री देह को लेकर, स्त्री अधिकार को लेकर, वो बदली है, इसलिए अब वो बोल्ड नहीं रह गया, अब वो सहज लगता है कि ये एक जरूरी चीज है, ये वाजिब बातें हैं, इन पर सुनना चाहिए, इन पर सोचना चाहिए। तो जो कभी बोल्ड था अब वो सहज है और उसको सहज ही होना चाहिए था तब भी, अब भी वो। तो ये सब चीजें निकल करके ट्रेंड के तौर पर आई हैं। प्रेम एक ऐसा विषय रहा है जो हर कालखंड में रहा है।
हमारे समय में प्रेम कैसे एक नया ट्रेंड है, इसको ऐसे देखने की जरूरत है। एक रीतिकालीन प्रेम था जहां पर सब कुछ स्त्री को, मतलब स्त्री की ओर से कुछ नहीं था, सब कुछ पुरुष की ओर से था स्त्री के लिए, चाहे उसका देह वर्णन हो या जो कुछ भी हो। ये चीजें कहीं ना कहीं कमोबेश बहुत बाद तक आती रही। आप देखेंगे कि नए दौर में यह हुआ, अब स्त्रियों ने जो प्रेम कविताएं लिखनी शुरू की हैं, आप उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि वास्तविक प्रेम होता क्या है। वो देह वर्णन नहीं है। रीतिकाल की सारी कविता, धनानंद जैसे एक आध कवियों को छोड़ दें, वो देह वर्णन के अलावा कुछ नहीं, देह वर्णन है, नक्सिक वर्णन है, सारी चीजें हैं। लेकिन धनानंद के वहां ऐसा नहीं है। लेकिन आज की तरह देखेंगे तो अब जो है वो प्रेम कविता में हम सफर का जो भाव है, हम साथ चल रहे हैं, हम साथ काम कर रहे हैं, ये जो भाव आया है प्रेम कविताओं में, ये एक नया ट्रेंड है। एक नया ट्रेंड, ऐसा नहीं कि तुम घर में मेरी प्रतीक्षा सिर्फ कर रही हो या ऐसे सजी हो वैसे संवरी हो इत्यादि इत्यादि, तुम्हारी आंखें, ऐसा नहीं है। अब प्रेम कविताओं में अपने पार्टनर के श्रम का सम्मान है, जो कि एक वास्तविक स्थिति हो सकती है। प्रेम में बराबरी का भाव हो, जहां श्रम का सम्मान होगा वहां बराबरी का भाव। ये प्रेम कविताओं का नया ट्रेंड है। हिंदी प्रेम कविताओं के भीतर नए ढंग से कैसे प्रेम को देखें, कैसे उसको अभिव्यक्त करें, इस नए लड़कों की भी कविताएं और नई लड़कियों की भी कविताएं इस दौर इस तरह से देखने की उनको जरूरत है। दाम्पत्य प्रेम की बहुत अच्छी कविताएं आई हैं हिंदी में, बड़ी संख्या द्वितीया को लिखी गई कविताओं की, द्वितीया को यानी कि पत्नी से इतर किसी नायिका को संबोधित कविताएं अधिक रही हैं। एक अच्छी चीज है कि पिछले 50-60 वर्षों में और अब पिछले 20-25 वर्षों में तो मैं पार्टनर की बात कह रहा था, प्रेम की बात कह रहा था, उसमें दाम्पत्य प्रेम ने जगह बनाई है। यानी जो सीधे सीधे आप के जीवन में है, आपके पार्टनर के तौर पर, उसको लेकर जो कविताएं आई हैं वो एक अच्छी चीज है, नई चीज है। किसान जीवन, ग्रामीण कविताएं हिंदी में हैं ग्रामीण जीवन को लेकर के, लेकिन किसान जीवन अभी कम है, इसको पहचानने की जरूरत है। ये भी एक होता तो अधिक बात होती, क्योंकि किसान की समस्याएं हम सब बात करते हैं, लेकिन हिंदी में कहानियां भी कम है, कविताएं भी कम है इस विषय पर, कम से कम नए दौर में। राजनीतिक कविताएं, यह एक सनातन ट्रेंड है, लेकिन हर दौर में राजनीतिक कविता का चरित्र बदल जाता है। देखिए ना, भक्तिकालीन कविता जो है वो सिर्फ सांस्कृतिक कविता नहीं है, वो राजनीतिक कविता है। पूरे भक्तिकाल की कविता को आप देखें, वो एक साथ सांस्कृतिक कविता है, एक साथ राजनीतिक कविता है। स्वाधीनता आंदोलन के दौर की राजनीतिक कविता का स्वर अलग था। आजादी के तुरंत बाद मोहभंग का जो दौर था, उसके राजनीतिक कविता, हर दौर में राजनीतिक कविता कहीं ना कहीं जो है वो अपना काम करती है। और देखिए क्या है कि कविता या साहित्य मात्र का जो प्रथमता और अंततः कार्य है, वह किसी भी प्रकार की सत्ता का विलोम रचना है। वो सत्ता का विपक्ष तैयार है। साहित्य सत्ता के पक्ष में हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये उसका मूल चरित्र है। वो जब भी होगा वो उसके विपक्ष में होगा, और ये दुनिया भर में इसको स्वीकार किया गया है, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। देखिए साहित्य के फॉर्म होते हैं, किए जाते हैं, लेकिन तमाम दौर का आप याद करेंगे और आज का, तो राजनीतिक कविताएं आज भी हैं, अपने अपने ढंग से राजनीतिक कविताएं लोग लिखते हैं। वो वाम के लोग हों, दक्षिण के लोग हों, वो केंद्रीय राजनीति की बात करने वाले लोग हों, तमाम तरह से है, या अपने को अराजनीतिक कहने वाले लोग हों। राजनीतिक कविता 2 मिनट में खत्म करूंगा, 2 मिनट में है, तो कहने वाले लोग हैं। तो राजनीतिक कविता भी एक ट्रेंड है। राजनीतिक कविता का स्वरूप हमेशा बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, बल्कि कई बार तो इतनी तेजी से बदलता है कि आप मतलब लक्षित करना मुश्किल हो जाता है। और कई बार एक ही समय में कई राजनीतिक स्वर चल रहे होते हैं, राजनीतिक ट्रेंड की कविताएं चल रही थी। यानी कि सन 2022 में जो राजनीतिक कविताएं हैं, आप उन्हें एक सूक्ति से परिभाषित नहीं कर सकते। उनमें एक ट्रेंड के भीतर कई तरह की चीजें चल रही हैं, कई ट्रेंड चल रहे हैं, तो उसको भी देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। मित्रों, किसी भी साहित्य का काम अंततः जो लोकतांत्रिक चेतना है, वही उसका प्रोटोप्लाज्म है, वही उसका जीव द्रव्य है। कहीं का भी साहित्य, किसी भी तरह का साहित्य हो, उसका जीव द्रव्य जो है वो लोकतांत्रिक चेतना का विकास करना है। और जैसे जैसे लोकतांत्रिक चेतना का विकास होगा, साहित्य बदलता जाएगा। नए मनुष्य को परंपरा भी चाहिए, पुराना साहित्य भी चाहिए,
लेकिन उसकी प्राण वायु तो वह नया साहित्य ही बनेगा जिसमें उसके अपने समय की गूंज है, जिसमें आने वाले समय की गूंज है, जिसको पढ़कर कोई भी नया मनुष्य सांस ले और लगे कि ऑक्सीजन उसके फेफड़ों में गया है। धन्यवाद। थैंक यू श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आपने बहुत सुंदर बोला है, लगता है सुनते ही जाओ, मगर समय कम है आप लोगों के पास में। मैं इसके बाद आमंत्रण करता हूँ जी को, जो कर रही है। उन्होंने असमीज भाषा में जो नया धाराएं आ रहा है उसके बारे में हमें इनलाइटन करेंगे। Honorable Speaker, Chairman, and others, it's very nice to see such luminaries all around. And yesterday I was just traveling across here by the taxi. So the taxi driver, he happens to be a local person. He was telling me one thing very interesting. He said, "Sir, I'll not say anything against the traffic arrangement here because you're a policeman, you will not say anything against them. But when you go back as an author, he knew I was joining here, so as an author, can you write something which directly concerns us?" I asked him, "What is it?" He said, "Sir, I belong to a small village and the entire city is spreading all across, making concrete structures all over, and it's eating up our village." I told him this is my problem as well. Look at this. This, when an author, when a literature, he writes where he takes the inputs from. Normally, we understand that literature is basically a communication system through which you express yourself so that people know about your beliefs, customs, traditions, experiences, and life and living of yourself. Now, what I mean to say is what Mr. Srivastava has talked about. He has said a lot of emerging trends in Hindi literature. And in a global world today, similar trends are running all across. You can't have an island anywhere now. It's because of the fact that we have better connectivity from northeast to this part of the country now. So you can't have the stories of isolation and identity alone, or you cannot have stories of terrorism and fear and apprehension. That area is gone now, but let me tell you, though I was saying that it's a form of communication, the language, the literature, everything. A very tragic thing happened in case of Assamese language in 1826 when Assam came under the British rule. 1836, Assamese language lost its existence. All the officers started using other language, so Assamese was removed from the scenario. After a fight of around 36 years, in 1870s only, the language was again come back. Now, what I'm saying is, during this time of gloom, a very interesting thing happened, which all of you should probably know. That was 1846. The missionaries started an Assamese paper in Assam. It's called Orunodai. So we have 175-year-old the media history in Assam. So through that newspaper, they started creating a trend of social reform and a lot of other things like women education, writings by the local people and things like that. What I mean to say is, in that whole journey, it stayed for a few years. After that, some youth started bringing out the Assamese journals. Why I'm saying this is, all the different grammars you have seen in literature, romanticism, reformism, whatever, realism, all started developing and started coming to Assamese literature. And a lot of, I will not give that history as such, but in 1960s,
and around part of 70s. An interesting thing happened again in Assamese literature, that is about fiction. What happened in Assamese fiction? A person called Saurabh Chaliha, he wrote a story called Asanta Electron, that means the unstable electron. And that really changed the picture of story writing altogether, because he brought in certain surrealistic ideas, he brought in certain postmodernistic ideas. And we are children that time, so we just born that time. So we did not know anything about it. When we became young, we started reading such type of books by him, and people like us joined that bandwagon. So we have a very strong emerging trend from then in our postmodernist thinking and writing of stream of consciousness type of stories. Once in a story of mine, I've written how the protagonist of my story, at the end of the story, he goes to the river and sits beside the river, and he tells the river, "Look, this is my worries, this is my thing inside my heart. I would love to tell the river only, because the river will carry it all along with its wave." Then he told the river again, "Look, I hate sea because Samudra, the sea, I hate seas because if I tell sea that what I feel bad about my life, it comes back again to me as waves and tides, because sea is in a closed atmosphere." So what I'm saying is, these are trends coming very strongly in Assam. Apart from that, what he was talking about, say for example, the revisiting the mythological stories, revisiting the folktale characters, is a very important parallel trend happening in our place. There are a lot of characters being from mythological stories are being relooked at. This is one thing very important. I want to tell you, relating the taxi driver in the beginning. See, what he was saying is that how the writers can impact the society, or the society can impact the writing. This is the question when you talk about the trend. Now, here, when they talk about the women characters, very strong women characters from the history, from mythology, from the freedom struggle, there what the young writers have been telling is that you must see the gender sensitivity then that period, because things have been written, things have been reflected very wrongly in today's world if we do not look at those. So this is one very important trend. Along with that, the question of bringing into light the marginalized group of people, their aspirations, their hopes, and their different demands and necessities. For example, they have written about tea garden laborers who have been for the centuries they are there. They are having their own culture and things like that. Those type of things are coming into the fore now. Though other people also had written, but the basic fact was that it has included now the new writers. There, they have talked about the people of the smaller communities, because we know that Northeast is full of smaller ethnic groups, what Mr. Kamsi Saab was saying. A lot of young writers have taken up their stories, the smaller communities, smaller nationality, and they are being focused now. This is a very important thing happening. A lot of times we don't look at it, but very interesting. But then the rural and urban dynamics, that is what the taxi driver was saying about eating up the rural areas by the city expansion. In Assam also, we have seen a lot of stories and fictions written by the young writers about rural life. One, Monica Devi, she's sitting here as a listener.
She has written a lot of stories like that, and even bringing in the rural dialect, which are not in written form. So those are important happenings. Along with that, I would like to say one thing. When we depict the rural areas of today in our emerging trend of literature, we see that rural life of today is much different than what it used to be in the narratives of earlier write-ups. A lot of people have written a lot of rural life stories in earlier literature, but today's there is a change because of the fact that rural people are also connected with the township for different reasons, whether through the social media, so through the cyberspace, whatever way. So there is a trend on that line, but it has a different sort of a reflection altogether. Then one thing is important. See, certain issues like during the pandemic, one very important thing happened again. We all realized that the problems of dividing people on different locations, dividing people according to the communities do not actually go along with the survival of humanity. So a lot of stories during pandemics had come which has really talked about, which has really highlighted the highlighted the humanity and its survival and the whole question of human love and coexistence altogether. So this is a very important, even in poetry, in poetry also we see such type of trends. As the chairman is saying, time is up. I just want to thank you all very much. But let me tell you, while discussing that trend, uh, do we follow there's a dilemma in front of a writer. Do we follow the trend or we should be writing from our own heart to create a new trend altogether? Is the question. I'm leaving it up to you. Thank you very much. Thank you, Mr. Seken. Really, you have touched some trends which have emerged in Assamese literature. Now we will go to another very advanced literature of Northeastern region, that is Manipuri literature, rich literature, and certainly there must be such trends going on in your literature also. Yes, thank you, Mr. Chairman and other dignitaries on the dais and the ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank Sahitya Academy and the Ministry of Culture for inviting me for this 3 days International Literature Festival. I will give you a short introduction of Manipuri language or some trend because 10 minutes is very small minutes for us. As you know, since I'm speaking in the outside Manipur, I think we will revisit to the Manipuri literature at least for some minutes. So, Manipur, as you know, that I will say that Manipuri literature is known as Meitei and it was recognized by Sahitya Academy in 1972, and it is included in the Eighth Schedule in 1992 after 20 years span. And the Manipuri literature, we can divide it into three periods. Then these three periods, in the ancient periods, may cover from early time to the close of the 15th century. Yeah. So I will come, and these are the things. And but let me give only 2 3 minutes, And that of the medieval from 16th century to the end of 19th century, and that of modern periods from the beginning of the 20th century AD. And during these 2 3 periods, we have so many developments because, as you know, we are culturally and religiously we change from the 15th century from our old Manipuri that religious sentiment to the that pre-Vaishnavites this school of Chaitanya Deva. Then there are so many changes, and it affects the whole literature of the state. And
These are the things, and we have changed our. But we are very culturally very these risk, states, and we have so many books on every uh, subject of the human civilization and developments, and you can see all these things in our book. And in the starting of these modern periods, so with the introduction of the that Indian the English school system and the introduction of Manipuri Meitei script in the as the medium of expression in Bharati University in 1910, we have changed. We have so many changes in our cultural and literature also. And you can see there are so many Manipuri scholars who are well versed in Bengali and Sanskrit at that time, but they have not the knowledge of the old Manipuri literature. And then we have this after adopting Meitei language, there we have some modern Manipuri literature, Trinities, Chavo Kamal, Anahal, and they are all the poets, essays, and the novelists in another sense. And Dr. Kamal's novel Madhavi, Hijamangals, Kambatoibi, and Chauba's Lavangalata were the outstanding work of the in the field of Manipuri literature. And Irawat, Navadip, and Dharendrajit were also the pioneer of Manipuri literature. And we have so many genre also in the drama, in the poetry, and in every field we have developed. And we have so many playwrights, and we have so many criticisms book. And now we are now in a very transparent period, because we have adopted the Bengali script about 400 years back, and now we are introducing again our own Meitei script. So we have started learning from the art from the class early classes. That is, we have completed now 15 years. So if we have to publish one book nowadays, we have to publish in two languages. One is the earlier Bengali, and another is that Meitei. So it is now we are somewhat suffering a lot, but now we are having trains, and there are in our train now we have more poetries were written by the youngster, and you can see, and these are the theme are on the conditions surrounding them, and all the these having these mm, problems of their life, hollowness, and these things are. And now I think we have more in the earlier we have more translation work in from Hindi, from English, and from Sanskrit also. There are many scholars, but nowadays due to the they have not now the Manipuri youngster have not studied Hindi, Sanskrit, and so we have a lack of knowledge about these epics and these. They are more tilted towards this English education system. This is not good for us also, but we have not lose our thought, because there are so many institutions now going on having this Hindi, Sanskrit, and other languages in Manipur University and other institutions. And again, we would like to thank to the government Indian policy that they have started now having these Yuba awards and etc. etc. They have started from by the Sahitya Academy from 2011, and as you know how it was established, these Yuba awards also. It is long back in 2011 when that our President Abdul Kalam has
initiated this procedure, and it is very good now as compared with other language also in Manipur. We our youngsters now translated from many books from other languages, and they have published books on poetry, novels, and others genre. And for your kind information, I would like to inform you. We so far we have so many good writers in as poets. I will read out their name. Some are Memcho V. R. K. Bhuvan, Sharatchandra, Raghu Raishankem, Vidyananda, and we have good short story writer also K. Kumar Biramani and Prakash and Sonamani and Nilvi Shastri, Bomcha, and now another trend is that now our people, youngsters are now very much interested in writing novels. And we have some novelists starting from old. One is M.K. Binodini, then B.M. Maisnamba, Beral Thanga, and Hijam Guno, Chitesor, Botanya, Devi, etc. Yeah, thank you, Oh, sir. so I will give that. There are so many these literary group in Manipur. They are supporting our literary movements. Earlier, starting from 1935, we have the Manipuri Sahitya Parishad. Then we have Cultural Forum. We have Naro Sahitya Premi Samiti, which I headed for the last 6 years. They are doing good work, and beside these, we have many cultural literary organizations known as like Pole, Writer Forums, and others literary organizations, etc. They are doing very good work for the development of Manipuri literature, and they also publish book on the different lines of that literature. And one thing I would like to give my suggestion is that there are so many Manipuri people besides Manipur state. There are Kashar, Tripura, and other places, and they are having also very much keen interest in promoting Manipuri literature. So I will conclude my talk. Thank you, Mr. Chairman. Mr. K. Upendra Sharma has given a brief account of Manipuri literature. Now I request Mrs. Rosmi Narjari. I don't know whether she will be speaking about Boro literature, trends going on in Boro literature or in English literature, because she writes in English, and I don't know whether she writes in Boro. Very good afternoon to all of you. Because the question has been put to me before I go there, I would just like to put it straight across. I probably would like to talk about emerging trends in Northeastern literature. Neither Boro nor English nor Assamese, but It will be Northeastern literature. most welcome, Yeah, overall, most welcome. Very good afternoon once again to all of you. But please don't confine to English literature emerging from the Northeastern region. Cover other aspects also. Yes, definitely. Because in the Northeast, the hills, the mountains, the woods, the rivers, these are not just parts of nature. These are our deities. We worship them because they heal us, they nurture us, and because we are very passionate about them, we write about them. And this is why our literature revolves around them, whether it be writings in English or whether it be writings in our local tongues. And in this, keeping this center, we see mainly three emerging trends in Northeastern literature. First, language of expression. Two, I like to call it fringe perception. And three, literature from the Northeast that is emerging in the recent times is very free-spirited, very unstructured, and very, very fun.
So when we talk about language of expression, the young generation cannot be bothered with the politics of language. Whether there is any central pressure or whether there is any laws passed or official language, no, they cannot be bothered with the politics of language. They would like to express in the medium in which they are most comfortable and in which they are most expressive. So what happens in the latest trend from the Northeast? We have parallel growth of literature, writings in English as well as writings in all the tongues. So I am covering all the languages. So when we're talking of language of expression, yes, we have this parallel trend. So it's a very, very good sign. It is not that one language is eating up another language, but it's a growing parallel language. So in this, we cover the literature of the Northeast is covering from the grassroots right up to those connected here in the Northeast. And then coming to the second point, which I call fringe perception, it is about belonging and unbelonging, which has always been a conflict with the Northeastern people. But the geographical bottleneck of the Northeast from the Indian mainland is now being hammered by the hammer of literature by the younger generation. They are using such medium, they are using the internet, and they are covering, they are taking up all languages from the Northeast as well as English, and they're breaking the bottleneck, the geographical bottleneck. And Northeastern literature is now being perceived as literature worth reading, not just in the Indian mainland, but abroad in the global platform. And also because a lot of the Northeastern kids, I would like to call them kids, because they are more passionate about their roots. They are searching for their roots through our folklore, through our legends and myths, and they are writing about them. They are translating them. They are researching and finding out old people, tale bearers who have carried folklore in their verbals, in their oral narratives, and they are making them repeat these stories. So probably they're having a greater documentation of Northeast literature. And then coming to the third point, when I say Northeastern literature is emerging into a very free-spirited, unstructured, and very refined literature. I will give you one example of one book I have read recently. It is The Many That I Am, Writings from Nagaland, edited by Anula Sotakumar. It's a beautiful book, and it's a collage of all the genres that literature can possibly have. It is actually a genre-defining book. It has fiction, it has poems, it has sketches, it has folklore translated, it has Sumi Naga, Ao Naga, and Zilian folk literature translated into English verses and put there. And along with that, they have stories retold by women, folklore reimagined and retold, and they're all put together into this book, which is a very, very brilliant emerging trend from the Northeast. This is a collage of genres. So this is why I like to call the emerging trend as one of the unstructured and free-spirited ones. And why I call it a very, very fine literature in the emerging trends, because we have been able to groom the younger generation. What they write, they show us. I consider myself in the older generation because. So what they write, they would like to consult with us, and they have us for their first generation writers, and they probably are the second and third generation. Because normally, I call myself among the first generation writers because before us, literature, because there was no literature as such, our stories were all verbal and orally carried down. So we being the first generations, we have some challenges. But when the second and third generation kids are writing, so we can tell them that these are the challenges we faced, but this is how we modulated and modified it. So you can do this and that. We can advise and suggest. Which is why the emerging trend is
coming into all of this, this is not very a rigid guideline. This is not a very rigid rule. I'm saying this is just my viewpoint. Considering this, now we categorize into poetry, fiction, and non-fiction categories in which we now see the trends that are happening. In poetry, we have now, the Northeast is now having the brilliance of performance poetry, also open mic poetry, and also again, our poetry is very, very unstructured. Our poems read like we are just talking, like they're narrating about the hills, the trees, and are finding a metaphor of life and existence in these. So this is our poetry. In fiction, once again, we like to go back to our folk tales because there is a connect there. These folk tales, as we retell our stories, form a bridge that connects our root to the present and help us find a reason in our existence, a reason in our being ourselves. And in these fiction, we also portray our struggles, our triumphs, our brewing descent and eventual rebellion. And sometimes we also talk about literature that is being written for, by, and about LGBT. And we have also spoken about insurgencies, and which is why I call the emerging trend as a very, very free-spirited one. And then we also have the graphic novel. I think you have a cut. I just take 2 more minutes. We have the graphic novels. We had a very beautiful graphic novel by the name of The Real Miss Borkatoki by Shishir Basumatari. And then we had another very beautiful one by Kanata Chimo. By Yumlam Tana also. Sorry? Yumlam Tana also. Oh, yes, of course, yes. Thank you for bringing that to notice. And then when you're talking about literature from the Northeast, I'd also like to bring to notice writings from Arunachal Pradesh, The Inheritance of Birds, edited by Mamanda, and Around the Hearth, Khasi Stories by Kinpam Singh Nokingre. So these are the emerging trends, and these are not just tales about the Northeast. We also have people writing the But we have to stop now because time is short and we have one. Ankush Saitya's detective series. And thank you for giving me a patient here right after the lunch. Thank you for giving me a patient. The topic is such that you can go on talking whole day, but due to time constraint, we have to restrict our speakers now. Our last speaker is Dr. Rumi Naqvi, who is more interested in the Northeastern literature than literatures of the other parts of India. Well, thank you very much, sir. And without further ado, I think I should start right away because it's such time rush issue. I actually wanted, I just consider this as topic writing, some thoughts. So they basically are specific points which are paragraphs. But the first one was about the term Northeast, which I skipped. The work of established Northeast poets such as Robin Singh Nagom or Gangong, Nagom, or Kinthom or Desmond Hamaprang could be starkly realistic or even sharply political in that sense. But then we should not look at overtly political in a negative eye. I would rather say that sharply political would maybe an expression of the hurt that the poets may have seen in the society or may have tried to come to terms with various political as well as major other problems that plague the region. But in fact, you could even look at the political as even poetry of witness, much like feminine Greek poet C.P. Coffey, or even stalwarts like Neruda or Gates. Um,
It's a poem by influence that I would like to read called Shillong Bypass, and I probably skip it through, but anyway. The first stanza is like this. It's called Shillong Bypass. The first stanza. The multi-lane Shillong bypass had miraculously bypassed construction for years. We blame the government, we blame the landowners, but what was the truth? Kevin, the insider, told the story. The farmers, he said, were not to be faulted. They were waiting for compensations. A court of the special judge had ordered all 62 of them to be cross-examined for payment. And what did the lawyer do? And then the poem goes on, so I'll skip this through. So the lawyer, next page he becomes, he discovered he was still the government lawyer. He prayed for time. In this way, the 62 farmers had turned up at the court for 62 months. And then the last stanza, but one day the lawyer became an honorable judge, and then nothing could be spoken against him. So, well, that's a political poem too. So, well, yeah, okay, the Shillong School of Indian English Poetry. And forget about the Bombay School, there's no need to even. If we have time, I'll probably go back to it. Otherwise, I'll skip it through. Okay. Looking at the immense body of work, issues of race, of identity, of history, of culture, a proud acceptance of oral folk myths and legends, and also confidence in being oneself, a kind of, self-celebration, which you might see in literature coming out these days, which I think is a great expression of, confidence of a literary, canon. I mean, if you look at modern Indian English poetry, with all due respect to Ezekiel, but he is the only one who starts with something called modernism. Before Ezekiel, even great names like Naidu, etc., look very, dated and, look very, derived and, so on and so forth. And then if you look at people like Kulakar or other side, real celebration of self, doesn't matter what you're talking about. This you could see in Chinese Paryad's Boats on Land, the book of short stories. You could see this in works of Eastern Kire, for instance. And the celebration, it's like, if you look at Ben Okri, the book of Favish Road, for instance, celebrates, Yoruba culture, and, so it's a great kind of, coming up, with, strength and so, that, okay. There are a couple of things I would like to do, but I'll do it very fast. I would like to take this opportunity to focus on a poet, Navnita Kanungo, and she's got two books published. First was published by the Academy in 2014, A Map of Ruins, and the second was 159, which is published by Poetry Wala, 2018. So I'm going to read two short poems, if I could. There's a poem by Navnita called Freedom. It's, sorry. Oh, sorry. Okay. It's a poem called The Missing Truth. The missing tooth. There were reasons for which we had it painfully uprooted, and now the gap of the missing tooth is an embarrassing memory in the mouth. But the tongue is a child habitually searching for a world
where it is not. So, okay. So do I have some more time? Yes, sir? Okay. With this, we come to the end of today's this session. We starting from the Sanskrit literature, which we thought that Sanskrit is a dead language, so no literature is created in modern days, nowadays in the Sanskrit. But through this speech from Balaram Shukla, we came to know that not only it is a vibrant, but a lot of new trends are coming up. A lot of people are writing in the Sanskrit. We have heard from Jitendra Srivastava about the trends which is going on in Hindi, from Kolosoikya, about the trends which is going in Assamese. From Upendra Sharmaji, we were enlightened with the brief account of the Manipuri literature, and then Rosmi Narjari has given a bird's eye view on the trends which is going on in Northeastern region literature. I thank all the participants of the panel, and also to the audience who have listened very patiently. And I'm very glad that we have a full house today. Usually, whenever there is a discussion about Northeastern region, only we people from the Northeastern region used to see, few of us. Today, since it was also of North, we got audience from both Northeastern region and from the North, and I'm glad. I thank all of you also. With these few words, I conclude this session with thanks to the Site Academy for keeping this subject for panel discussion. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you to the chair and other participants and the lovely audience as well. Emerging trends in Northern East and Northern literature, इस पे अभी आपने इस परिचर्चा को सुना. थोड़ा सा विराम हम यहाँ लेंगे और यहीं से टाउन हॉल से हम अग्रसर होंगे हमारे अगले सत्र की ओर जो 4:30 बजे से शुरू होगा. आप सभी का धन्यवाद करते हैं. एक चीज़ का आप लोग अगर ध्यान रखें तो यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है. आप अगर सामने से आवाजाही ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा. आप सभी का धन्यवाद. नमस्कार.